हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इस छोटे से वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि पाइथन क्या है, पाइथन का यूज़ होता है, पाइथन किसने डेवलप किया, वो सभी के सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Are you passionate about coding? There is a huge range of programming languages to choose from. Have you ever heard about Python? Python is a programming language that was created by Guido van Rossum. He named it after the television show Monty Python's Flying Circus. Why Python? Python has a simple look and feel, similar to the English language. Python as a whole can be used to any sphere of development, mainly web applications, game development, machine learning, and robotics. Python is available to everyone for free and can be modified and redistributed. Python is used on various platforms like Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, and more. Let's see how commands which we write in English are understood by the computer. This can be explained in 4 simple steps. First, the Python program gets executed directly from the code. Then, the code is converted into an intermediate bytecode. Bytecode is then converted into the machine language by the Python interpreter. This machine language is only understood by the computer. Finally, the code gets executed. ये वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट कर देना है, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जानकारी उनको भी पता चलनी चाहिए। ओके देन, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ नया आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।